So, hello everyone, this is CACS, Sparsh this side. I hope you are doing well. काफी अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है सीए फाइनल न्यू कोर्स में 24. So, as you know, we have launched our ultimate case study book, the Samadhan. And if you haven't watched that video, I will pin it. Go watch it right away. तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसी केस स्टडीज है जो कुछ एक सैम्पल केस स्टडीज हम बोल सकते हैं जो समाधान में है जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए. एंड कोइंसिडेंटली आईसीएआई ने भी 7 केस स्टडीज लॉन्च किया है. अब आप सोचोगे सर 7 केस स्टडीज है समाधान में फिर आपके नहीं है फिर आपको क्या करना पड़ेगा. डोंट वरी, ऑलरेडी वो सारी केस स्टडी समाधान में प्लेस थी. थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हमको करने पड़े बट ऑलरेडी सारी वो केस स्टडी समाधान में प्लेस थी. एंड इवन जो एक केस स्टडी अभी में हम स्टार्ट करेंगे जिससे दैट इज फ्रॉम द आईसीआई, कुछ गलतियां उसमें आईसीआई की हम डिस्कस करेंगे वहां पे, बट जो समाधान में हमने उसको पूरा करेक्ट किया है. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टूल फॉर यू इन योर सीए फाइनल आईबीएस प्रिपरेशन. सो या चालू करते हैं. जस्ट मैं केस स्टडी है जो अभी आईसीआई ने लॉन्च किया था, अभी जो रिसेंट में आज ही आई है. और उसी वही केस स्टडी हमारा केस स्टडी 75 है हमारी बुक में, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं. जस्ट अ सेकंड. तो देखिए आप अपरा एंड संपत have completed their articleship training from a reputed CA firm in Chennai. Both were good in studies and after qualifying they decided to become partners. Similar story. साथ में है जय और वीरू, बन गए सीए तो क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे. इन दिस केस दे एक्चुअली बिकम सीए. और रियल वर्ल्ड में तो खैर ठीक है, जाने दो, दुख की बातें नहीं है अभी. ठीक है, तो दे स्टार्टेड अ फर्म इन कोची इन द नेम ऑफ आपरा संपदन कंपनी. Currently they have a well established practice spread across various spheres including FEMA, corporate law, international taxation, valuation, etc. So these are the words, these are the things that the question may revolve around. Okay, FEMA, corporate law, just getting a clue here. Apra and Sampath had in the past done few engagements for Greenly Limited. Ramnik, the Vice President Finance of Greenly Limited, invited Apra and Sampath for a meeting. Vice President called them for a meeting. And Greenly Limited is one of the leading laundry in Delhi. For cleaning suits, it charges rupees 625 per suit. अब वहां पे they have given the price which they have incurred, cleaning material, labor charges, variable overheads, fixed overheads. So where the question is leading, it is we can say it is leading to the minimum price. The concept in SCMP, the minimum price concept. This is where it is leading. The company is known for timely delivery and quality service. Hence, it charges premium for its service. बेसिक सा है सारी चीजें. फिक्स्ड ओवरहेड जनरली इंक्लूड्स द ऑफिस रेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी. अ कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड इन दिल्ली on account of T20, it is G20, and a hotel is required to provide premium laundry services for which the company has been approached for its lowest cost. There's a possibility of 150 suits being given for laundry on the priority basis. The company has sufficient material तो है, but वहां पे क्या दिक्कत जाता है, द वर्क. फिर 55% ऑफ द एडिशनल वर्क कैन बी डन इन वर्किंग आवर्स. फॉर द रेस्ट ओवर टाइम बाय एम्प्लॉइज विल बी रिक्वायर्ड. ओवर टाइम, और ओवर टाइम कितना है, 1.5x. So we have to calculate regarding the overtime as well. Second, Greenly Limited is having 3 years average profit of rupees 10 crores. CSR की यहाँ पे आ गया, CSR company law. ठीक है. Green Foundation was formed by a few like-minded who wanted to take up the cost of education for kids living in the slum. It was registered under 12A and ATG of the Income Tax Act, but not registered with MCA. क्या compulsion है क्या? Is there a compulsion to be registered under MCA to get under the purview of CSR? It is a compulsion. सोचो सोचो क्या हो सकता है, सोचो. However, the foundation is carrying out certain CSR projects on a smaller scale for some entities in 2019. कंडक्ट तो कर रहा है. The company purchased the land and city. अब यहाँ पे देखो एक इंस्टीट्यूट की क्या गलती थी. 2018 यहाँ पे उन लोगों ने कर दिया था, बट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन में उन्होंने जो यहाँ पे रखा था फिगर, दैट वाज ऑफ दिस ओनली. वहां पे चेंज नहीं किया था, यहाँ पे उन्होंने 2018 कर दिया, यहाँ पे चेंज नहीं किया. एंड अनदर थिंग, द ओरिजिनल क्वेश्चन विच वाज देयर वाज ऑफ 22-23. तो वहां पे वो फिगर था 331. वहां पे इंस्टीट्यूट चेंज नहीं कर पाया, वो 331 ही था. बट 23 24 में 348. नीचे जो कैलकुलेशन आप देखोगे
कैलकुलेशन मिस्टेक है वहां पे, तो वहां पे वो 348 से कैलकुलेट करना, मैं आपको बताता हूँ, चलो वो भी आपके सामने आएगा। ठीक है, एबीसी एलएलपी द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ ग्रीनली लिमिटेड रिजाइन ड्यू टू पर्सनल रीजन एंड अपरा संपत वाज प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड। ठीक है, आफ्टर मीटिंग वाज कंप्लीटेड, रामनिक मेट संपत एंड हैड अ कैजुअल डिस्कशन विद हिम। ही टोल्ड दैट हिज डॉटर was pursuing PG from Stanford University, USA, which has remitted $50,000. That is 40 lakhs for maintenance under LRS. LRS का क्वेश्चन, FEMA, FEMA. Thankfully, he did not have to do any other remittance during the year. ठीक है, while Sampath was busy in discussion with Ramnik, CA Mani, the internal auditor of Greenly Limited, and a close friend was Apara, approached her for a quick chat. Mani informed Apara that his practice was going good and he was appointed as statutory auditor of listed entity. Lately, he has been finalizing the audit letter, communicating key points to TCWG. ठीक है, बेसिक द आइडिया वी गॉट ऑफ द केस स्टडी, सिंपल केस स्टडी है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। इसी तरीके से केस स्टडी फॉर्म होगी। देखिए, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट द सब्जेक्ट। सी, आई नो इट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, यू हैव टू स्टडी मेनी सब्जेक्ट्स एट अ टाइम, but yeah, there's a way and we are definitely finding it for you. So this case study book is a very good step forward in that direction, is a great leap forward in that direction, because it contains many case studies for you to practice. And I hope, देखो जैसे हमने ये केस स्टडीज पहले डाल दी थी इसमें, वी डिडंट न्यू दैट आईसीएआई ये केस स्टडीज अब इसके लिए लॉन्च करेगा। देखो, केस स्टडीज आईसीएआई की है कहीं ना कहीं, बट द सिलेक्शन हैज टू बी डन बाय आईसीएआई एंड वी डिडंट न्यू कि वो उसमें भी, तो हो सकता है आपके पेपर्स में भी यहीं से कुछ केस स्टडीज अपीयर हो जाए। देयर इज अ वेरी ग्रेट चांस ऑफ दैट राइट नाउ। सो इट इज अ वेरी गुड लीव फॉर यू, द समाधान केस स्टडी बुक। यू शुड डेफिनेटली check the website in the link in the description. Okay, so yeah, the multiple choice question, from remittance of rupees 40 lakhs the authorized dealers is, क्या वहां पे क्या पॉइंट है, टीसीएस का पॉइंट है। क्या ऑथराइज डीलर्स को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है क्या? कुछ सिनारियो याद आ रहा है? 7 lakhs तक का टीसीएस नहीं रहता, उसके ऊपर आपका टीसीएस है 5%, कुछ याद आ रहा है? याद करो। ठीक है, द कैपिटल गेन अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ लैंड, जो इन्होंने लैंड सेल किया था ये वाला, इसका कैपिटल गेन का स्ट्रक्चर। अब देखो, यहां पे भी सिंपल सा है, देखो सिंपल, देयर इज अ वेरी बेसिक सिंपल कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल गेन, देयर इज नो ट्रिकी पॉइंट इन दैट। व्हाइल ड्राफ्टिंग द ऑडिट लेटर, यहाँ पे क्या बात है, यूडिन की बात है कि यूडिन वेयर यू नीड टू जनरेट अ यूडिन एंड यू नो यूडिन इज जनरेटेड इन only in certificates and assurance services, not for letters. तो वही शायद पॉइंट रहेगा इसमें। Yes, separate UDIN has to be generated for statutory audit and letter. No UDIN is required for certificates and audit reports and audit assurance and attestation function, not for any letters. Yeah. Yes, one single UDIN can be generated for all documents of one client. UDINs are required to be generated client wise. ये ठीक है, there's no discussion in that. Greenly Limited wants to ascertain whether it can incur CSR through Green Foundation. वही point. Whether it is a compulsion that Green Foundation should be registered under MCA. सोचो, is there any compulsion? कभी पढ़ा हो, कभी देखा हो, सोचो, is there any compulsion? So yeah, देखेंगे, we will look out the answers. During the conclusion of audit, Apara was thinking if she is required to report the fact of the resignation by previous auditor. Yes, definitely. As a chartered accountant, आप लोग को पता है, it is a requirement under, सिंपल है यार, आप लोग को पता ही होगा, तो उसमें कोई वो नहीं है, कारो। इट इज अ रिक्वायरमेंट अंडर कारो, यू नो दैट। कारो बोलता है कि अगर कोई प्रीवियस ऑडिटर रिजाइन करता है, सो यू हैव टू रिपोर्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, लेट्स लुक आउट फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। इनिमरेट द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अपरा वांट्स टू विथड्रॉ द ड्रॉ टू अटेंशन, सिंपल सिंपल ये बोला हुआ है, सिंपल ये लास्ट में पूछा हुआ है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में, वेयर इन विच सर्कमस्टेंसेस द ऑडिटर में कंसीडर टू इंक्लूड एन EOM, दैट इज योर एम्फेसिस ऑफ मैटर, पहला। ठीक है, उसके बाद 7, Sampath discussed with Apara, thought that it would be handy and easy to explain the client the detail of LRS if they have sent a draft a note covering various aspects. You just have to write a brief note on LRS, nothing else. ठीक है, Ramnik request to do, ठीक है, firstly you have to understand what they are expecting in the questions. Like in the first case, they are expecting you to write the प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन कैजुअल वैकेंसी। यहाँ पे वो पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल जो प्रोसीजर है वो आपको बताना है। इसमें आपको जो कंपनीज है जो सीएनएजी के अंदर आती है, विच आर कवर्ड अंडर परव्यू ऑफ सीएनएजी, वहां पे भी आपको बताना है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भले ही वो कंपनी रिक्वायर्ड नहीं अंडर सीएनएजी, बट यू हैव टू गिव द होल प्रोसेस, बिकॉज
यहाँ पे वो आपसे प्रोसीजर पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपको वो केस से रिलेटेड नहीं पूछ रहे हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यू. देखो यहीं पे ना शायद आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम यू, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. ठीक है, चलो लास्ट. Ramnik request you to compute the incremental cost of which may be taken as a base coding for minimum price per suit. You have to calculate the minimum price per suit. And second proviso, चलो ये तो ठीक है. चलो अब देखो आते हैं क्वेश्चंस पे. पहला मैंने आपको बताया था क्या है टीसीएस का पॉइंट. देखो 206 requires collection of taxes so at the rate 5% of the amount in excess of 7 lakhs. When the amount in excess of 7 lakhs, it is required to collect tax at the rate of 5%. What is the amount? 40 lakh. It is in excess of 7 lakh. तो कितना अमाउंट होगा? 2 lakhs. 40 lakhs का 5% 2 lakhs. No, the amount in excess of 7 lakhs. That is your 40 minus 7, 33 lakhs, and 33 lakhs ka 5%, 1.765 lakhs. The correct answer is B. Yes. Second, the capital gain. So what is the capital gain here? See, what is the purchase consideration that you have given at the time of your purchase? Would we take like the value that is 1.25 crores or the stamp duty value 1.75 crores, which we would take as the value of your purchase consideration? Yes, you guess. You will take 1.75 crores. ठीक है, उसके बाद जब आपने लैंड को सेल किया है तो वहां पे आप कौन सी वैल्यू लेंगे? 5 crores और 5.4 crores. सी फर्स्ट देयर इज अ कंडीशन दैट यू हैव टू लुक इफ इट इज इन वायोलेशन ऑफ 110%. याद आ रहा है 110%. तो इफ द अमाउंट इज मोर देन 110% ऑफ द actual consideration received, then we will take the stamp duty valuation. If not, then we will take the actual consideration. So in this case, it is not more than 110%. We will take the actual consideration. So here it is. Total consideration will be 5 crores. Index cost is 1.75 to 348. यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने 331 लिया था, गलती हुई थी, but ठीक है, कोई इशू नहीं. We have corrected it here. So 1.75 crores into 348 into 167, जो भी आपका इंडेक्सेशन का आता है. So capital gain is your 1.35 crores. ठीक है. थर्ड का मैंने बता दिया यूडिन का. फोर्थ का ही बता दिया. हाँ, फोर्थ का देखो क्या है. इट इज अ कंपल्शन और नॉट? नो, इट इज नॉट कंपल्सन. अ कंपनी इस्टेब्लिश, तो कौन कौन कर सकता है? कंपनी इस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट और रजिस्टर्ड ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी established by company either singly or along with other company. A company established under section 8 or registered trust or established by central government or state government or any other under the act of parliament. तो क्या है वो? अंडर सेक्शन 8 रजिस्टर्ड है वो. यहाँ पे देखो हमने देखा था यहाँ पे, सॉरी या रजिस्टर्ड है किसके अंदर? 12A और 80G के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. तो वहां पे क्या कंपल्सन है क्या उसके लिए? नहीं है कि वो उसको एमसी के अंदर रजिस्टर्ड होना है. तो वहां पे क्या है? बी. सो इट कैन इंकर CSR इंकर द फाउंडेशन इज रजिस्टर्ड अंडर 12A एंड 80G ऑफ द इनकम टैक्स. उसके बाद फिफ्थ वही बता दिया, कारो वही होगा. यस, एज पर कारो क्लॉज. क्लॉज कौन सा है? क्लॉज 18 ऑफ पैरा 3 ऑफ कम कारो. अपारा संपदन कंपनी शुड रिपोर्ट द रेजिग्नेशन ऑफ एबीसी एलएलपी. ठीक है. बेसिक क्वेश्चंस, they are very basic questions. Just there is, you need to have information of many subjects at a time, and that is why you need practice more than the revision. You need practice of finding the answers, of solving case studies. So that is why the samadhan book is here. Yeah. So descriptive questions. What is the procedure? So like you have to write the basic procedure. As I told you, you also have to write CNAG procedure as well. ठीक है. बेसिक वो लिखना है. EOM कब कब देते हैं? The circumstances in which you can include EOM. So these are the circumstances. Basic है, you know, you have read it in audit and it's simple. In the above view, Apara to draw attention to the readers of financial in the audit report, it should them indicating the fact of their appointment due to resignation of is not correct. They have to issue EOM. Note covering various aspect of LRS. मैं बोला था you have to write a note covering various aspect of LRS. Just basic you have to write. It applies to all resident. It allows freely remit up to USD 2,50,000
डॉलर्स, और उसके बाद इट कैन बी इजीली परमिसेबल करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्स वाई जी। अब देखो मिनिमम प्राइस कैलकुलेशन, ये देखो पहले आपको दिया हुआ है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट। कॉस्ट कितना आ रहा था? क्लीनिंग मटेरियल का पहले आपने कॉस्ट ले लिया, देन लेबर, लेबर में क्या था आपके जितना वो था, पहले तो आपका जो कितना लोगे, यू हैव टू टेक इंक्रीमेंटल कॉस्ट हियर। तो जो 55% यू वर द वर्क you were completing in the normal hours, you won't take that. You have to take only the incremental cost, the additional cost you will be incurring for the special project. तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? 45% ही यहाँ पे आपका आएगा, और 16 to 1.5 because the overtime rate was 1.5. वेरिएबल ओवरहेड सेम रहेंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट मिल गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सूट्स, यू विल गेट द कोड पर सूट। बट कौन से एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखने हैं कि क्या वो ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए सीख है, बट क्या वो लॉन्ग रन बेनिफिट आपको मिलेगा क्या उससे? नहीं। और उसके बाद क्या होगा कि आपको कोई भी प्राइस कोट करना है तो दैट शुड बी अबव योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। और बहुत सारे अदर आपको फैक्टर्स भी ध्यान में रखने हैं। और जब आप बाकियों से एक प्रीमियम चार्ज करते हैं तो व्हाई नॉट चार्ज प्रीमियम हियर, बिकॉज ऑफ योर क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। सिंपल। ये भी केस स्टडी देखो ऑलरेडी आपके इसमें इंक्लूडेड है, जो मतलब आई है अभी। और ऊपर भी हम एक बार देख लेंगे ये वाली केस स्टडी भी, जो आई एस नंबर 74 इन समाधान, दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, बीएसपी वाली। देन अगेन wanton टेरन ऑलरेडी इंक्लूडेड। एक सीए अरविंद कपूर वाली केस स्टडी भी है, दैट इज ऑल्सो ऑलरेडी इंक्लूडेड, वो थोड़ी ऊपर है बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट। दिस ऑल्सो केस स्टडी इकोनॉमिक सर्वे, दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अरविंद कपूर इज ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट देयर। तो चलो ठीक है, एक और केस स्टडी अपन देख लेते हैं, केस स्टडी नंबर 62, वो भी एक अच्छी केस स्टडी है। एंड हाँ, मैं एक और आपको बात बता देता हूँ, वन थिंग आई हैव टू टेल यू, लाइक like a month or so before the exam, we are going to give you a detailed index for these case studies, so that it would include the key points of each case studies, like in which case study what they have asked, like TDS, TCS and everything, so that if similar case study pops out in exam, then it will be very easier for you to find out which case study has those points. Because when you're reading a case study in the exam, then you know that these case studies are similar, that the points are similar, then you can go through that exact case study, and maybe the answers may be similar as well, so that would be very easier for you to write answer in the exam and to find answer in the exam. So we will definitely do it for you. A detailed index will be coming a month or so before the exam. Right now you don't need it. A month or so before the exam we will definitely give you the detailed index of the case study book as well, so you don't need to worry about that as well. Yeah, so let's go to case study 62. Let's go fast. Yeah. Hmm. केस स्टडी 60, तारीफ होगी यहाँ पे अब, देयर इज अ मच प्रेशर फॉर यू। यू आर एन ओपन माइंडेड, हाईली सेंसिबल, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल विथ वैल्यू एडेड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। आह, चने के झाड़ में बिल्कुल आपको चढ़ाते हुए। यू आर ऑल्सो डायरेक्टर, क्या बात है, डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, चेयरमैन और द मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द बोर्ड, मेनी लिस्टेड एंड अनलिस्टेड एंटिटीज। यू आर ऑल्सो इन द बोर्ड ऑफ एसएफ लिमिटेड एज अ प्रोफेशनल डायरेक्टर। ओ माय गॉड। अब बैकग्राउंड दिया हुआ है, फंडामेंटल टू की बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। देयर इज नथिंग लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, जस्ट एसएफएल इज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ कास्टिंग ऑफ एप्लीकेबल ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रैक्टर टू इंडस्ट्रियल इंजन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, पावर। सो क्या क्या करते हैं वो, ये बेसिक इंफॉर्मेशन वहां पे दे दी गई है, ठीक है, नथिंग दैट मोर। उसके बाद SFL is involved in development, ठीक है। It has won much coveted quality certifications including ISO, QS 9000, ISO 14, ठीक है। मैनेजमेंट दिया हुआ है, हाईली कॉम्पिटेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखना नीचे बुराई भी करेंगे, दे विल बैलेंस इट आउट, तो ठीक है वो चल जाएगा। मिस्टर शेषाद्री, स्पेशल डायरेक्टर कॉस्टिंग फाइनेंस, who has a thorough insight of the day-to-day activities. Corporate culture, nevertheless, it believes the principle of developing with everyone. SFL looks its responsibility to all stakeholders and equally concerned with society. SFL spend an average of rupees 5 lakh on CSR, which is approved in budget. Budget overview है, फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, द वेरिएंस बिटवीन द बजट
ranks is actually widening and becoming a cause of concern for the top management. Under the circumstances, it was emphasized that every person in the company should participate in budgetary process. क्या आया? पार्टिसिपेशन इन बजट याद आया कुछ? याद आया? पार्टिसिपेशन इन बजट कुछ याद आ रहा है? एससीएमपी क्या? ठीक है, चलो. Your call. At the board meeting of the company proposed to be convened on 10 January, besides approving and taking on record inter alia, the unaudited financial statement for the third quarter and 9 months ended 30/9/2019, certain additional matters are proposed to be discussed as well. Okay. Discussion 1. New venture of online shopping and automobile space has been proposed. ठीक है, to evaluate the cost price statement in respect of an inquiry of supply of 2,50,000 auto components. There's a special order of 2,50,000 inquiry आई है, तो we have to give the cost and price statement here. The company has received an inquiry for supply of 2,50,000 number of special type of auto components. The company can execute the assignment provided a capital investment of 3 lakh. 3 lakh is your additional investment and working capital to the extent of 3 month cost of sale. The cost of sale, you have to calculate the 3 months of that, and that would be your additional working capital requirement as well. ठीक है, cost is given, raw material, direct labor hours, labor rate is given, factory overhead ₹4 per direct labor hours, so the total labor hours के हिसाब से आपका factory overhead है. Selling and distribution expenses are given. Borrowed funds will be available at the rate 11.5% on additional capital outlay. The company expect net return on 25% on sales, 25% on sales, 25% on sales, costing sales. ठीक है, to evaluate the certain requirements of companies act, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दी हुई ग्रुप कंपनीज की, एबीसी लिमिटेड लिस्टेड, इक्विटी शेयर कैपिटल, टर्नओवर, लोन, ये किसके लिए दिया होगा? कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रहेगा आगे. समथिंग कुछ ऑडिट की एप्लीकेबल है कि नहीं, समथिंग फॉर द एप्लीकेबिलिटी, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस. अदर इनपुट्स फॉर डिस्कशन. Despite, अब देखो, अब गलतियां. Despite a robust internal check and internal control system prevailing in the company, a theft of cash of rupees 15 lakh by the cashier in January was detected in May 20, after end of financial year, but were not approved, but before reporting. ठीक है, याद आया कुछ? ठीक है, रहेगा, इसका भी पॉइंट रहेगा. Mr. Q, a director of SFL, proceeding on a long foreign tour, appointed Mr. Y as an alternate director for him. During his absence, the article of the company provide for appointment of alternate director. Mr. Q claims that he has a right to appoint an alternate director. ठीक है, the articles of the company provide for. ठीक है, उसके बाद Mr. Karthik expressed his apprehension that his giving utmost freedom and flexibility to the employees to set their own targets in the budget setting process have potential danger. ठीक है, याद आ रहा है? एम्प्लॉयज अगर खुद अपना बजट सेट करेंगे तो क्या होगा? The negative points that we used to remember is SCMP. Those are the points. And if you're new, this is the concept of SCMP budgeting. Mr. Karthik expressed his apprehension that giving utmost freedom and flexibility to employees to set their own targets in budget. Okay, sorry. Mr. Karthik also informed that in the view of excellent contribution of the progress, there is a proposal to appoint Mr. Seshadri, who is a special director costing and finance of SFL, as a managing director of two other companies unrelated to SFL. Unrelated companies, managing director in two other companies which are unrelated. क्या बन सकता है क्या? Mr. Karthik also affirmed that there is a corporate CIRP going before the NCLT in one of the group companies, and he want to know which of the following statement is correct. A financial creditor or authorized or the financial creditor, if it is happens to be a related party, shall not have any right to representation, participation, or meeting in the committee of COC. A financial creditor regulated by financial sector regulator, RBI and everything. If it is a related party, वही यहाँ पे है, तो वो commencement date shall not have right to representation, participation. दोनों में से कौन सी सही है वो हमको बताना है. ठीक है, you are requested. अब ये क्वेश्चन, the theft of 15 lakhs क्या करना पड़ेगा? It is an adjusting event or non adjusting event? It is an adjusting event. छोटी कंपनी ने यार 15 लाख रुपए चले गए, it is an adjusting event. ठीक है, it is an need to be adjusted because क्यों? going concern affect हो सकता है. ठीक है, with reference to Mr. Karthik's apprehension in para 3, what there is a potential danger of having, ये पता होगा आप लोग को बहुत. The students which have studied SCMP earlier, उनको पता होगा. और एक सिंपल यहाँ से भी आप बता सकते हैं क्या होगा. if employees are given chance to make their own budget, what would they do? They would set a budget of lower standard so that they could achieve it easily and get shabashi from their boss. So that thing we would do, which we will call it slackness in budget. Okay? The contention of Mr. Q to appoint an alternate director is correct as the article provide appointment of alternate director, incorrect as the authority to appoint has been vested in the board of director, that to subject to power empowerment of here.
आप अल्टरनेट डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर सकता है? ओनली बोर्ड, ओनली बोर्ड। यू नो दैट अल्टरनेट डायरेक्टर कैन ओनली बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड। ठीक है। अंडर प्रोविजन ऑफ द आईबीसी as enshrined in the section 21 of the code and analyze the correctness of the statement. जो statement था ऊपर वाला याद है, financial creditor who is a related party you cannot vote, एक ये हो गया। सेकेंड है financial creditor who is regulated by a financial sector regulator एंड उसके पास कन्वर्ट होके आएंगे शेयर्स, तो क्या वो वोट कर सकता है क्या? यस डेफिनेटली वो वोट कर सकता है, बट फर्स्ट वाला कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, वेयर एज statement 2 is incorrect. This would be the, yeah. Then descriptive question. Considering the inputs in discussion when advisor, what factors would be considered by formulating the audit strategy of the company? So basically, you have to give the factors to be considered in formulating the audit strategy. That is what this is being asked from you. पहले आपको you have to write the specific points, then industry specific points like the online shopping aspect of the company as well. ठीक है। सेवन क्वेश्चन इन द लाइट ऑफ इनपुट्स इन द डिस्कशन टू compute a cost and price statement and indicating the price that should be quoted to the customer. You have to make a cost and price statement. In the light of the inputs, see the costing question, the practical question of costing are very interesting and very easy. If it appears in your exam, that is a very good point for you because that would be a easy practical part for you for do. Because क्या होगा ना, अगर आपको नहीं भी पता है ना, from basic knowledge you can get the answer for this. Yeah. In the light of the inputs in above, in the discussion 3, explain which group of the group companies are required to appoint an internal auditor. जो हमको criteria दिया था ना, बस उसी के लिए था। The criteria given here is for internal auditor. Simple. ठीक है। चलो ये आंसर्स देखो ऑलमोस्ट वही मैच होंगे आपके जो हमने डिस्कस किया। बी, डी, बी एंड देन योर बी एंड ए। ठीक है। चलो उसके बाद योर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे? जनरल फैक्टर्स, द एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, preliminary judgment as to materiality, the degree to which team should carry out further assessment, the broad nature, extent, lining of substance to test or change in the previous year strategy of substance to strategy. General factors बता दिए। Now specific factors for online shopping because the company is that in that industry, then you have to give the specific factors. Class of transaction, the procedure with both IT and manual system, how the transaction is initiated, recorded, processed, corrected, everything. The related accounting records, how the information capture system captures event and condition and controls regarding the general entries and non-standard general entries. Then after that, cost and price statement simple सा है। रॉ मटेरियल आपको वहां पे दिया था, direct labor hours that is given, the rate is given, factory overhead directly दिया हुआ है 8000 into 4, that was your into labor hours, selling and distribution cost directly given 30,000, so the cost of sale is 9 lakh 10,000. Then interest on investment, that is one tricky part here, not that tricky, simple basically. So what is the interest? The working capital first, working capital on cost 9 lakh 10,000 into 3 by 12, this is your working capital, this is your fixed capital, so this is an additional investment you are required, and into interest, so that is your 60,667 total cost आ गया। Then profit add करोगे 25% of this, then you will get the total sale value divided by number of units, you will get the rate per unit what you will charge. Simple. अब इंटरनल ऑडिट किस किस पे एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, आउटस्टैंडिंग लोन कितना 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर एट एनी टाइम डिपॉजिट उससे ज्यादा है। एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान रखना एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी उससे ज्यादा हो गया, जरूरी नहीं एट द एंड ऑफ द ईयर ज्यादा होना चाहिए, कभी भी उससे ज्यादा हो गया दिस एप्लीकेबल। फिर प्राइवेट कंपनी पे दो कंडीशन है, कौन सी? 200 करोड़ वाली और 100 करोड़ वाली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ। ठीक है। इन द गिवन केस एबीसी इज अ लिस्टेड कंपनी तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है। अनलिस्टेड कंपनी है बट उसका कितना है? पेड अप शेयर कैपिटल 60 है जो 50 से ज्यादा है तो एप्लीकेबल है। एलएमएन इज एन अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी हैविंग 60 करोड़ एज इक्विटी शेयर कैपिटल, टर्नओवर 190 कम है, 50 करोड़ लोन कम है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एज सिंपल एज दैट। सो ये I have given you a summary of few case studies that are included in the Samadhan. So trust me, it is going to be a very helpful tool for you in your CA final exam preparations. And definitely, I hope ki it would be worth it for you. So on that note, do check out the link in the description to check out Samadhan.
and definitely you should go for it. And on that note, bye bye. Take care. See you next time.